Hello, welcome to this new tutorial. In this tutorial, we shall talk about achievements of Directive Principle of State Policy. Well, the Directive Principle of State Policies are like a pole star that provides directions. Their basic aim is to pursue or to follow the government to provide social and economic justice in all spheres of life, keeping in view its limited material resources at the earliest possible. In fact, many have been implemented very successfully. Actually, no government can afford to ignore these instructions as they are the mirror of the public opinion and also reflect the basic spirit of preamble of our constitution. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो एक पोल स्टार की तरह काम करती है विच ऑलवेज गिव्स डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट, और इसका बेसिक एम ये है कि गवर्नमेंट सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करे इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। और जब हम अचीवमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत से प्रिंसिपल्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया है, और दरअसल कोई भी सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो एक मिरर की तरह काम करता है, एक आईने की तरह काम करता है जो रिफ्लेक्ट करता है हमारे सोसाइटी में जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस ट्यूटोरियल में हम अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट, व्हाट डज डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हैव अचीव्ड। सो लेट अस बिगिन विद द फॉलोइंग पॉइंट्स, एंड फॉलोइंग पॉइंट्स विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अचीवमेंट्स एंड स्टेप टेकन इन दिस डायरेक्शंस। So let us take first. Land reform have been introduced and Jagirdaris and Zamindari system have been abolished. So, after independence, one of the most important reform which Government of India has brought is land reform, and through this land reform, we have successfully abolished the Jagirdaris and the Zamindari system which was there in India before independence. लैंड रिफॉर्म के थ्रू सरकार ने जो जागीरदारी और ज़मींदारी सिस्टम थी उसको एबॉलिश कर दिया, और इस एबॉलिशन के थ्रू एक लैंड रिफॉर्म लाया गया हिंदुस्तान में, और इस लैंड रिफॉर्म के थ्रू बहुत से लोगों को ज़मीनें बांटी गई, जिससे पीपल गॉट बेनिफिट्स एंड दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग एंड दे स्टार्टेड मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस लैंड। हमेशा ये भी याद रखना चाहिए कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज लैंड रिफॉर्म। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट वी हैव there has been rapid industrialization and tremendous increase in agriculture production through green revolution. The next very important point talks about rapid industrialization and the green revolution which India brought in late 60s. Now this is very important that the directive principle of state policy also talks about a rapid industrialization. Now this has benefited agriculture, because today we have a new form of industry which has come called food processing industry, and food processing industry is directly connected with the agriculture production, and because of rapid industrialization it has benefited the green revolution also. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके सहारे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला सके इस इंडिया में, एज वेल एज इट हैज़ बेनिफिटेड द ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति को भी बहुत मजबूती मिली, और आज के तारीख में agriculture productions are very important, and this is one of the most important achievements of directive principle of state policy. Next we have National Commission for the Welfare of Women. When it comes to women welfare, so we already have a national commission which talks about
various issues as well as welfare of the women. नारी शक्ति की जब बात आती है, नारी को बचाने की जब बात आती है, तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी नेशनल कमीशन है और ये नेशनल कमीशन बहुत से प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है जो प्रॉब्लम डायरेक्टली वुमेन्स रिलेटेड हो. So that is another very important achievement of directive principle of state policy. Next we have ceiling has been placed on land and property to fix the limits of person holding. Yes, when it comes to holding of property as well as land, there is a ceiling which has been put up by the government of India. Now why this ceiling is very important is all because we already have talked about the reform in land reforms as well as the abolition of jagirdaris and zamindaris. If we don't put ceiling when it comes to holding property and land, then obviously we are creating a society wherein we'll have rich people and we'll have poor people, and the gap between the rich and poor would be very wide. Therefore, there has been an important point of ceiling as far as how much a person can hold property as well as land. जब लैंड और प्रॉपर्टी की बात आती है तब वहाँ पर एक सीलिंग डाला गया है ताकि एक बैलेंस बनाए रखे बिटवीन पीपल हु हैव अ प्रॉपर्टी एंड पीपल हु हैव नथिंग. अगर हम वो बैलेंस नहीं बनाए रखेंगे तो इन शॉर्ट हम जागीरदारी और ज़मींदारी को प्रमोट करेंगे. इसलिए टू कट डाउन द डिफरेंसेस अमंग द पीपल हु हैव एवरीथिंग एंड पीपल हु हैव नथिंग, there is a ceiling when it comes to holding property and land. Next, the privy purses of ex-princes has been abolished. Yes, this is another very important point or achievements or directive principle of state policy, that after independence, when we put together all those princely states, all the princely states used to get certain purview purse or some kind of money was allotted to them, some kind of stipend was allotted to them, and this stipend, the money allotment to them, was another very important issue, that most of the princely states would enjoy the same status, and therefore it was very difficult to incorporate all these princely states into the mainstream of Indian politics. Therefore, subsequently government of India decided to abolish these special concessions, special money allotment to this princely state, and in a way we brought them down back to the mainstream of Indian politics. जब हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं और उनको देने वाला जो पर्सिस होती है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मनी, ये एबॉलिश किया गया ताकि हर एक इंसान को एक इक्वालिटी में ला सके. और इससे क्या हो गया कि जब ये पैसा देना उनको बंद कर दिया तब एक इक्वालिटी एस्टैब्लिश की गई. अदरवाइज़ जो राजा महाराजा होते हैं उनको टैक्स पेयर्स का मनी देना पड़ता था और वो लोग अपनी ज़िंदगी ऐश की तरह जीते थे ऑन द टैक्स पेयर्स मनी. एंड देयरफॉर टू ब्रिंग द इक्वालिटी, the one of the very important achievement of directive principle of state policy was that we abolished the privy purses which was given to all the ex-princes states. Next, life insurance, general insurance, and most of the banks have been nationalized. Well, today all the insurance companies, all the banks in sectors in India, all have been nationalized. And the nationalization was carried out in early 70s, and this way we have managed to protect the money of all the account holders. Normally when we talk about nationalization of banks today, every individual savings are saved, whether that bank collapse or whether the bank make profit, their savings have been saved because of the nationalization of बैंक्स. जब हम लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और बैंक्स की बात करते हैं तो आज सब ये बैंक्स और इंश्योरेंस नेशनलाइज हो चुके हैं. इससे एक प्रोटेक्शन मिला है हर एक अकाउंट होल्डर को कि अगर बैंक लॉस में भी चला जाए या बैंक बंद भी हो जाए तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, योर मनी वुड बी सेव्ड.
Next very important point of directive principle of state policies achievement is, in order to reduce economic disparity, right to property has been deleted from the chapter of fundamental rights. So in order to reduce that economic disparities, as I said earlier, between the people who have everything and people who have nothing, and to bring some kind of equality within the state, right to property has been deleted from the chapter of fundamental rights. Earlier we had a right to property as a fundamental rights. Today we don't have it. Today we have deleted that from the chapter of fundamental rights. जब हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करते हैं तो एक फैक्टर जो था वो दैट लेड टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वाज हैविंग अ राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी होना कोई गलत चीज़ नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह से लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, दैट मेड अ बिग फैक्टर टू इंक्रीज द और डिवाइड द सोसाइटी इनटू पीपल हु हैव एवरीथिंग एंड पीपल हु हैड नथिंग. इसलिए टू ब्रिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, इंडिया फाइनली डिलीटेड दिस चैप्टर फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. तो इसलिए आज हमें राइट टू प्रॉपर्टी हमारा अधिकार नहीं है जो पहले था. नेक्स्ट, subsidized public distribution schemes have been launched to help the poor people. Basically, under this subsidized public distribution, government of India introduced ration, government of India introduced food supply to a poor people at very subsidized rates. Like you must have seen at the public distribution centers, we get rice, wheat, sugar at very subsidized rates, and this is especially been provided for a poor people basically who live below the poverty line. गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के द्वारा सब्सिडाइज्ड आइटम को लोगों को दिया है, जैसे कि राइस, वीट, शुगर, ऑयल, व्हाटएवर. सो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको सब्सिडाइज किया है, उनके रेट्स कम किए गए ओनली फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन. सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू reach out to the poor people of India. Next, rules requires that both men's and women's are paid equal wages for equal work. Again, very important point that directive principle of state policy have achieved a very important milestone when it comes to paying the wages for a man as well as woman for equal work, equal pay. जब हम equal work और equal pay की बात करते हैं तो आज इंडिया में थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज अचीवमेंट, भले वो आदमी हो या औरत हो, दोनों को समान वेजेस दिए जाएंगे according to their same job. So there is no discrimination between men and women when it comes to wages for the equal pay for equal work. Next, untouchability has been abolished and sincere efforts have been made for the upliftment of SC, STs and other backward classes. Very important point is that Government of India has managed to abolish the untouchability which was there in India before independence and even after independence for some time, and there is a sincere efforts made by the government to uplift the various other communities such as ST, SCs and backward classes, just in order to bring them to the mainstream of Indian administration or Indian politics. जब हम अनटचेबिलिटी की बात करती है तब हमें ये भी होना चाहिए कि भारत सरकार ने अभी अनटचेबिलिटी को फिनिश कर दिया है और एक सिंसियर एफर्ट किया है व्हेन इट कम्स टू अपलिफ्टमेंट ऑफ ST, STs and OBCs communities, so that we can bring them back to the mainstream of Indian politics. So this is one of the most important achievement of directive principle of state policy. Next, through 73rd and 74th constitution amendment, panchayatiraj has been given the constitutional status with more power. Next very important point is that Government of India realized that if you want to connect villages to the mainstream of Indian politics, then we need to empower our villagers. We need to empower the system which is there in the village, and therefore panchayatiraj becomes very important institution which
empower villagers and uplift them to become a part of India's mainstream politics. And therefore, through 73rd and 74th Constitutional Amendment, the Panchayatiraj has given a special status under the Constitution with more power. जब हम गांव की बात करते हैं, गांव की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो गांव में है वो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है. इस इंस्टीट्यूशन को आज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है विथ more powers, and therefore Panchayati Raj institution is one of the most important when it comes to grassroots democracy or democracy at lower level. Next we have is a small scale and a village industry, and Khadi Gram Udyog have been encouraged to bring prosperity to the rural area. Every time when we talk about rural area, connecting rural area to the mainstream of Indian economy, then we need to understand here that small scale and village industries, especially Khadi Gram Udyog, have played a important role to bring that economic prosperity and to empower the rural area in India. जब भी हम गांव की बात करती है और रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, तब हमें ये पता होना चाहिए कि जो छोटे छोटे जो उद्योग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है या विलेज इंडस्ट्री है या फिर खादी ग्राम उद्योग ही क्यों ना हो, इस सब इंस्टीट्यूशन को बहुत एनकरेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द विलेजेस एज वेल एज जॉब, एंड देयरफॉर दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. And the last, India has also seen actively cooperating with the UN to promote international peace and security. Yes, for last 70 years we have seen that India has been at forerunners when it comes to maintaining international peace and security, and we are working together with United Nations. So the above steps on the part of the central and the state government indicate that many directive principles of state policy have been implemented to lay down the foundation of the secular, socialist and a welfare state. However, still there is a long way to go to achieve all of them in full. So I hope you have understood the achievements of directive principle of state policy. So see you soon in next tutorial. Till then, take care.